I am Manjula Dawar. I am nursing tutor Index Nursing College. Today I discuss about it inflammation. Start now. Inflammation, complex protective reaction caused by various endo and exogenous stimuli. Injurious agents are destroyed, diluted, or walled off. Without without inflammation and mechanism of healing, cold organisms not survive can be potentially harmful. Terminology: Greek root itis, metritis, not urethritis; colplitis, not vaginitis; nephritis, not rhinitis. Mechanism: Local, in cases of mild injury; systemic, इसमें 3 मेजर्स: अल्ट्रेशन, सेकेंड एक्जुडेशन, इंफ्लामेटरी एक्जुडेट, लिक्विड एक्जुडेट, सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट. थर्ड है प्रोलिफरेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन एंड फाइब्रस टिश्यू. Usually, all three components not the same intensity. Classification: severe points of view: length, acute, chronic, subacute, hyperacute. According to predominant components: first, ulcerative predominance of necrosis, diphtheria. Second, exudative pleuritis. Proliferative polycystic thickening of the wall by fibrous tissue. Classification: according to histological features: non-specific, not possible to trace the etiology; specific, example TB. According to causative agent with aseptic, sterile, chemical substance, congelation, radiation, inflammation has a repetitive character. Septic में caused by living organism, inflammation has a protective characters. Acute inflammation, important role in inflammation has microcirculation, supply of white blood cell, interleukins, fibrin, etc. Local symptomatology: classical 5 symptoms. फर्स्ट है कॉलर, सेकेंड रबर, थर्ड ट्यूमर, फोर्थ डॉलर, फिफ्थ फंक्सियोलेसा. इसमें फर्स्ट कॉलर में हीट, रबर में रेडनेस, ट्यूमर में स्वेलिंग, डॉलर में पेन, फंक्सियोलेसा में लॉस ऑफ फंक्शन. सिस्टमेटिक symptomatology: fever, irritation of center of thermoregulation, TNF, IL first, IL-6, high erythrocyte sedimentation rate. Leukocytosis, increased number of WBC. ल्यूकोसाइटोसिस में increased number of WBC. Bacteria, neutrophils, parasites, eosinophils, viruses, lymphocytosis. Leukopenia decreased. Viral infections, salmonella infections, rickettsiosis, immunologic reactions.
increased level of some substance, C-reactive protein. Vascular change, vasodilation, increased permeability of vessels due to widened intercell junctions and contraction of endothelial cell, histamine, Wage bradykinin. Protein poor transudate edema. Protein rich exudate. Leukocyte dependent endothelial injury, proteolysis, protein leakage, platelet adhesion, thrombosis, inflammation, vascular change में vasodilation. Cellular event, inflammation of cellular event, leukocytes, margination, rolling, adhesion, transmigration, immigration of neutrophils, 1/3 day monocytes, 2/3 days chemotaxis, endogenous signaling molecules, lymphokinase, exogenous toxins, phagocytosis, lysosomal enzymes, free radical oxidative burst, passive immigration of RBC, no active role in inflammation, hemorrhagic inflammation, phagocytosis, adhesion and immigration into cytoplasm, engulfment, lysosomes, destruction in highly violent microorganism can die leukocytes and not the microbes in highly resistant microorganism persistent within macrophage activation after many years. Inflammation, outcomes of acute inflammation. First, resolution, restoration to normal limited injury, chemical substance neutralization, normalization of vascular permeability, apoptosis of inflammatory cell, lymphatic drainage, healing by scar. First, resolution. Second, healing by scar. Tissue destruction, fibrinous inflammation, purulent inflammation, abscess formation, post pyogenic membrane resorption, pseudoxanthoma cell week of month. इन्फ्लामेशन का क्रोनिक इन्फ्लामेशन रीजन, persisting infection or prolonged exposure to irritant, extra cell, surviving of agent TBC, repeated acute inflammation, otitis, rhinitis, primary chronic inflammation, low virulence, sterile inflammations, silicosis. रीजन में फोर्थ, ऑटोइम्यून रिएक्शंस, रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल, राउंड सेल इन्फिल्ट्रेट, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस बाय वेरियस मेडिएटर, फाइट एजेंट्स, invades lymphocytes, plasma cell,
cystotoxic cell coordination with other parts of immune system, plasma cell production of Ig, monocytes, macrophages, specialized cell, Zeidelphage cell, मैक्रोफेज। इन्फ्लामेशन का मॉर्फोलॉजिक पैटर्न ऑफ इन्फ्लामेशन, फर्स्ट अल्टरेटिव, सेकेंड एक्जिडेटिव, थर्ड प्रोलिफरेटिव। फर्स्ट अल्टरेटिव, सेकेंड एक्जिडेटिव, एक्जिडेटिव में सिरोसिस, सेकेंड फिब्रिनियस, थर्ड सुपरेटिव, फोर्थ स्यूडोमेम्ब्रेनियस, फिफ्थ नेक्रोटिजिंग गैंग्रीनियस, थर्ड है प्रोलिफरेटिव, प्राइमरी और सेकेंडरी। मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन है इन्फ्लामेशन मॉर्फोलॉजिक पैटर्न ऑफ इन्फ्लामेशन, सीरियस एक्सेसिव accumulation of fluid, view proteins, skin blisters, serous membranous initial phases of inflammation, modification, catarrhal accumulation of mucus, fibrinous, higher vascular permeability, exudation of fibrinogen, fibrin, example pericarditis, core villosum, core histumum, hairy heart, fibrinolysis, resolution, organization, fibrosis, scar। मॉर्फोलॉजिक पैटर्न इन्फ्लामेशन, उसमें सीरस, सेकेंड फिब्रिनियस, सुपरेटिव प्यूरुलेंट, accumulation of neutrophilic leukocytes, information of pus, pyogenic bacteria, interstitial, phlegmon, diffuse soft tissue, absence, localized collection, acute में border surrounding tissue, chronic border pyogenic membrane, pseudo absence, pus in lumen of halo organ, formation of suppurative fistulae, accumulation of pus in preform cavities, empyema, gallbladder, thoracic, complication of suppurative inflammation, bacteria, no clinical symptoms, dangers of formation of secondary foci of inflammation, endocarditis और meningitis। सेप्सिस में मेसी बैक्टीरिया, सेप्टिक फीवर, एक्टिवेशन ऑफ स्प्लीन, सेप्टिक शॉक, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेकेंडरी इन्फ्लामेशन ऑफ वॉल ऑफ द वेन विथ subsequent thrombosis, thromboembolization, pymia, hematogenous absence, infected infections, lymphangitis, lymphadenitis। Fourth, pseudomembranous, fibrinous, pseudomembranous diphtheria, corynebacterium, dysentery, shigella, fibrin, necrotic mucosa, etiologic agents, leukocytes, necrotizing, inflammatory necrosis of the surface, ulcer, skin gastritis, gangrenous, secondary modification by bacteria, weight gangrene, appendicitis, polycystitis, risk of perforations, peritonitis,
रिस्क ऑफ परपरेशन का रिस्क रहता है पेरिटोनाइटिस। ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, डिस्ट्रक्टिव क्रोनिक इन्फ्लामेशन टाइप, सेल mediated immune reaction, delayed aggregates of activated macrophages, epithelioid cell, multinucleated giant cell of Langerhans type X of organ body types. इन्फ्लामेशन, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का ग्रेन्युलोमेटस, नो एजेंट एलिमिनेशन बट वेलिंग ऑफ इंट्रासेल्युलरी एजेंट्स, TBC. ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है पैरासाइट्स, फंगाई, थर्ड है इनऑर्गेनिक मेटल्स और डस्ट, फोर्थ फॉरेन बॉडी, फिफ्थ अननोन. फर्स्ट है बैक्टीरिया, TBC, लेप्रोसी सिम्प्लिस थर्ड स्टेज, सेकेंड पैरासाइट्स, फंगाई, थर्ड इनऑर्गेनिक मेटल और डस्ट, सिलिकोसिस, बेरियोलोसिस, फोर्थ फॉरेन बॉडी, सुचर, स्कॉल्पर, ट्यूमर, ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस, फिफ्थ अननोन, सार्कोडोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, जनरल पैथोलॉजी. TBC, नोड्यूल, प्रोलिफरेटिव, ग्रोस ग्राइस, फिम 1 to mm मिलियम, सेंट्रल सॉफ्ट येलो नेक्रोसिस, चीज लाइक कैसियस कैल्सिफिकेशन, MI सेंट्रल कैसियस नेक्रोसिस, amorphous homogeneous karyotic powder, macrophages, epithelioid cell, multinucleated giant cell of Langerhans type, lymphocytic cream. TBC exudates, serofibrinous exudate, macrophages. लेप्रोसी, लेप्राई एशिया अफ्रीका, इंडर्मल मैक्रोफेजेस एंड स्चवन सेल, एयर ड्रॉपलेट, लॉन्ग कॉन्टैक्ट. रनाइटिस, आईलिड डिस्ट्रक्शन, फेसिस ल्यूटिना, लेप्रोमेटस इन्फेक्शियस, स्किनलेसेस, फोमी, मैक्रोफेजेस, वर्च्यू सेल, विसेरा, ट्यूबरक्लोइड, स्टेराइल. इन पेरिफेरल नर्व, ट्यूबरक्लोइड, ग्रेनुलोमास, एनेस्थेसिया, डेट सेकेंडरी इन्फेक्शन, एम्लोडोसिस. डेट सेकेंडरी इन्फेक्शन, डेट होती है लेप्रोसी, सेकेंडरी इन्फेक्शन एम्लोडोसिस. सिम्प्लिस इन्फ्लामेशन, सिम्प्लिस, ट्रेपोनेमा पेलिडम, स्पिचोट, STD, ट्रांसप्लासेंटल फीटल इन्फेक्शन, एक्वायर्ड थर्ड स्टेज, कंजेनाइटल, बेसिक माइक्रोस्पेशियल अपीयरेंस, फर्स्ट प्रोलिफरेटिव एंडोट्राइटिस, एंडोथेलियल हाइपरट्रोफी, इंटिमल फाइब्रोसिस, लोकल इस्चेमिया, इन्फ्लामेशन, प्लाज्मा सेल, गुमा, सेंट्रल कोगुलेशन नेक्रोसिस, स्पेसिफिक ग्रेन्युलेशन टिश्यू प्लस फाइब्रस टिश्यू.
inflammation simplex का primary simplex, contagious cancer, ulcus, room, heart cancer, panic, vagina cervix, painless heme ulceration, regional painless lymphadenopathy, spontaneous resolve weak scar. Inflammation simplex secondary simplex, contagious after 2 months, generalized lymphadenopathy, various cutaneous lesions, condylomata anogentile region, inner thick oral cavity. Simplex inflammation simplex tertiary simplex after long time 5 year. First है cardiovascular, second necrosyphilis, third है गुमा. First cardiovascular symplectic otitis proximal, first है endarteritis of vasa vasorum, scarring of media, dilation, aneurysm. Second necrosyphilis, taps dorsalis plus general paresis, generation of posterior column of spinal cord, sensory plus gut abnormality, cortical atrophy, psychotic deterioration, ulcerative lesions of bone skin. Inflammation congenital simplex. First है abortus, second infantile simplex, third late. First abortus, hepatomegaly, pancreatitis, pneumonia alba. Second infantile simplex, chronic rhinitis, mucocutaneous lesions. Third है late, less than 2 year duration. Hutchinson tight, notch, central incisor, keratitis, blindness, deafness, injury of 7th. Mulberry molars plus saddle nose. Thank you.